Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is lecture 27 of your signal system course. In this lecture, we will talk about the Laplace transform. Before this, we have discussed the Fourier series and Fourier transform. Fourier series, the problem with Fourier series was this, that although it was very useful, but Fourier series can only be used for those signals which are periodic. However, many signals in real life are aperiodic, which means that they don't repeat themselves. So we cannot use Fourier series for those signals which are aperiodic. So in order to overcome this problem, we introduce the Fourier transform, which can be used for not only for aperiodic signals, but Fourier transform is a more general thing which can also be used for periodic signals. So in that way, we obtained a unified representation through Fourier transform for aperiodic as well as periodic signals. However, there is a problem with Fourier transform as well, and the problem is that although we can use it for aperiodic signal as well as periodic signals, but in certain cases we may have some signals for which the Fourier transform does not exist. We have discussed the validity or the convergence property of Fourier transform when we discussed that, and there we have shown that there could be certain cases where the Fourier transform of a signal may not exist. So if we are unable to find the Fourier transform of a signal due to convergence issues, then obviously then we have a problem, because we don't know how to analyze those systems or those signals which do not have a Fourier transform representation. To overcome this very issue, today we are going to introduce Laplace transform, and you will see that Laplace transform is a more generalized technique. It is a tool which is more generalized. It can be used for those signals which are stable, for those systems which are stable, or for those signals whose Fourier transform exists, as well as it can also be used for those systems which are not stable or whose Fourier transform does not exist. So Fourier transform was better than Fourier series in a way that it allowed us to use it for not only for periodic signal but also for aperiodic signal. Still, there were some signals whose Fourier transform does not exist. But Laplace transform is a more general type of transform which can also be used to analyze such signals or such systems which are not stable. And today we will see that Fourier transform is a special case of Laplace transform. So from one tool to another we are moving, and we are trying to find a unified representation which can be used for periodic as well as aperiodic signals, and also for those signals whose Fourier transform does not exist. So Laplace transform is such a tool, and today we will start discussing this Laplace transform. Today we will introduce what is Laplace transform and what are the differences between Laplace transform and the Fourier transform, and in the coming lectures we will discuss in more detail the properties of Laplace transform, or the inverse Laplace transform, or the region of convergence, and these issues which are related to Laplace transform. So let's start today's lecture, which is about Laplace transform. Okay, so you may recall this thing we have already discussed, that if we have an LTI system whose impulse response is h of t, and we give it
to that LTI system a complex exponential of the form e raised to power st, then our yt is h of s e raised to power st, where h of s is defined like this: impulse response multiplied with e raised to power minus st dt, and we integrate it from minus infinity to plus infinity. In this expression, this s is a complex variable, and generally it is written as alpha plus j omega. We have already discussed this thing, and when we discussed the Fourier transform, and there we assume that this alpha is equals to 0, so s simply becomes equals to j omega. If in this expression the real part of this s becomes 0, which means alpha becomes 0 and s is simply equals to j omega, then this becomes the Fourier transform. So h of j omega will be h of t e raised to power minus j omega t dt, and we have already discussed that this is the Fourier transform. But from now onwards we will assume that this s, which is a complex variable, its real part is not equals to 0. So अगर तो आप real part को equals to 0 consider कर रहे हैं, तो then this becomes Fourier transform. If you assume that real part is not equals to the real part of s is not equals to 0, which means alpha is not equals to 0, then it is called Laplace transform. So that is the difference between Fourier transform and Laplace transform. This and once again I repeat that the difference is this variable s which we are using in this expression, generally it is equals to alpha plus j omega. So it has a non-zero real part, it has a non-zero imaginary part. If we assume that real part is equals to 0, then this becomes Fourier transform. But if we assume that real part is not equals to 0, then this becomes Laplace transform, which is given like this: h of s is ht e raised to power minus st dt. So when s is purely imaginary, that is s equals to j omega, the above integral corresponds to the Fourier transform of st. When s can generally have any value, not restricted to be purely imaginary or real, and generally if s is equals to alpha plus j omega, the above integral corresponds to Laplace transform of st. So in that way we can say that Laplace transform is more generalized transform as compared to Fourier transform, because in Fourier transform we restrict ourselves to the case when alpha is equals to 0. However, if we assume that alpha is not equals to 0, or if we take s in the more generalized form, this becomes the Laplace transform. So Laplace transform is more generalized as compared to Fourier transform, and today we will see that Laplace transform can be applied even to those situations where Fourier transform does not converge or does not exist. So another difference is a जो continuous time Fourier transform है, which we have already discussed, that is used to analyze stable continuous time system. If a system is stable then only its Fourier transform exists. But if a system is not stable, then its Fourier transform does not exist. So when we have an unstable system, then to analyze such system we need Laplace transform, because that system which is unstable cannot be analyzed using the technique of Fourier transform, because Fourier transform for such systems does not exist which are unstable. So Laplace transform can be used to analyze both stable and unstable continuous time systems because it is more generalized. अगर आप किसी भी सिग्नल का, किसी भी इम्पल्स रिस्पांस का, प्लीज़ रिमेंबर कि ये हम सिस्टम सिग्नल जो है उसको somehow interchangeably यूज़ कर रहे हैं. उसकी रीज़न अगर आपको क्लियर हो जाए तो फिर ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी कि सिस्टम इज समथिंग जिसको आप इनपुट देते हैं, इट प्रोड्यूसेस आउटपुट, बट सिस्टम जो कुछ खुद है दैट इज कंप्लीटली कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिग्नल विच इज कॉल्ड इट्स इम्पल्स रिस्पांस. सो सिस्टम को कैरेक्टराइज करने के लिए हमारे पास एक सिग्नल ही होता है जिसको हम इम्पल्स रिस्पांस कहते हैं. तो जब हम ये कहते हैं सिस्टम स्टेबल है या सिस्टम स्टेबल नहीं है, इट सिंपली मीन्स दिस कि क्या जो उसका इम्पल्स रिस्पांस है वो एच एफ टी, ठीक है, तो वो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता. इम्पल्स रिस्पांस ऑब्वियसली इज अ सिग्नल, बट दैट कोरेस्पॉन्ड्स टू अ सिस्टम.
सो इस वजह से हम बाज़ औक़ात ये टर्म्स इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि अनस्टेबल सिस्टम, स्टेबल सिस्टम, ठीक है, या सिग्नल, बाज़ औक़ात ये टर्म यूज़ कर रहे हैं, बट इट शुड बी clear in your mind that when we are talking about systems, it means we are talking about something which is represented by the impulse response h of t. So h of t की जब हम बात कर रहे हैं impulse response की, तो it should be clear in your mind that we are talking about the system. So Laplace transform can be used for those systems which are stable as well as they are unstable. दोनों किस्म के सिस्टम के लिए आप यूज कर सकते हैं because this is more generalized. ओके सो ये जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हमने प्रीवियस स्लाइड पे की, दिस इज कॉल्ड बायलेटरल लेप्लास ट्रांसफॉर्म बिकॉज द integral limits are from minus infinity to plus infinity. If the limits of this integral are from minus infinity to plus infinity, this is called bilateral Laplace transform. As opposed to this, we have a unilateral Laplace transform. In that case, the limits of this integral are from 0 to infinity. So if we have the limits from 0 to infinity, it is called unilateral Laplace transform. And if the limits of this integral are from minus infinity to plus infinity, this is called bilateral Laplace transform. Bilateral Laplace transform can be used for those signals which are causal as well as non-causal. However, unilateral Laplace transform can only be used for those signals which are causal. So bilateral Laplace transform can handle both causal and non-causal signals, whereas unilateral Laplace transform can only handle causal signals. So unilateral Laplace transform is a special case of bilateral Laplace transform. If you know that your signal, your impulse response, for example, starts from 0 and goes up till infinity, then you can use unilateral Laplace transform to analyze that. And in that case, its bilateral Laplace transform will be same as unilateral Laplace transform. But if for your signal, the impulse response does not start from 0, rather it starts from some negative value of n, like n is equals to minus 5 or minus 10 or minus 100, then you need to use bilateral Laplace transform. Then unilateral Laplace transform जो है वो आप के लिए उस सिग्नल को एनालाइज करने के लिए जो है वो सही तरीका नहीं होगा, बिकॉज यू नीड the Laplace your signal is non-zero for some negative values of n. Okay, so now let's talk about a little bit more about the relationship between Laplace transform and Fourier transform. So this is the definition of Laplace transform. X of s is xt e raised to power minus st dt, and an integral from minus infinity to plus infinity. So let's suppose that s, this complex variable, is equals to alpha plus j omega. So instead of s we can put here alpha plus j omega. So x of alpha plus j omega is xt e raised to power minus alpha plus j omega t dt. So we can write it like this: xt e raised to power minus alpha t multiplied with e raised to power minus j omega t dt. And you should be familiar with this expression. जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म को डिफाइन किया था तो दिस वाज xt e raised to power minus j omega t dt, and now we have an additional term which is e raised to power minus alpha t. So in a way it is the Fourier transform of this thing. Laplace transform is Fourier transform of xt e raised to power minus alpha t, because जो कुछ भी e raised to power minus j omega t से मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है. यानी अगर आपके पास xt e raised to power minus j omega t था तो दिस वाज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt. नाउ e raised to power minus j omega t के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज xt e raised to power minus alpha t. So this is the Fourier transform of xt e raised to power minus alpha t. So the Laplace transform of a signal xt can be thought of as Fourier transform of xt e raised to power minus alpha t. So it means we are multiplying our signal xt with a real exponential signal, because alpha is real, so e raised to power minus alpha t is a real exponential signal. So we are multiplying our signal with a real exponential signal, and if we take the result of that, if we take the Fourier transform of this xt e raised to power minus alpha t, so that would be the Laplace transform.
इफ अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो, फॉर एग्जांपल इन सारे केस में अगर कहीं पे भी अल्फा को हम जीरो अज्यूम कर लें, तो देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म आर वन एंड सेम थिंग। लेकिन अगर अल्फा नॉन जीरो है तो देन इट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म of xt is Fourier transform of xt e raised to power minus alpha t. So keep in mind that. Okay, so now let's take an example. We will start discussing this example with the help of our previous knowledge. यानी पहले हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की टर्मिनोलॉजी में ही बात करेंगे और उसके बाद जो है वो जनरल एक्सप्रेशन की बात करेंगे जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से हमें मिलता है. सो वी हैव अ सिग्नल एक्स टी विच इज़ ई रेज टू पावर माइनस ए टी यू टी विच इज़ अ काजल सिग्नल. ठीक है, क्यों काजल है? बिकॉज इट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड विद यू ऑफ टी एंड यू ऑफ टी इज़ व्हाट यू ऑफ टी स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड इट एग्जिस्ट अप टिल इन्फिनिटी. सो अगर ई रेज टू पावर माइनस ए टी की कोई वैल्यू जो है वो नेगेटिव है भी सही, तो जब ये यू टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर ये काजल बन जाएगा. सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ए टी विद यू टी रिजल्ट्स इन मेकिंग दिस सिग्नल एक्स टी काजल, बिकॉज यू टी चूँकि टी की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ज़ीरो है, तो जब आप ई रेज टू पावर माइनस ए टी को यू टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक्स टी विल बिकम काजल. सो दिस इज़ अ काजल सिग्नल. सो इस काजल सिग्नल का हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म पहले भी फाइंड किया था जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म की एग्जांपल की थी, और वहाँ पे हमने ये भी बात की थी कि दिस signal only converges when a is greater than 0. and what is the reason of that कि e raised to power minus at जो है, ठीक है, ये आपके पास एक डीकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल जब होगा तब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, वरना फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा. एंड इट कुड बी डीकेइंग एक्सपोनेंशियल ओनली व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, e रेज टू पावर 0 1 पे इसकी वैल्यू जो होगी वो ई रेज टू पावर माइनस ए होगी, 2 पे इसकी वैल्यू माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2a एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, सो इस तरह से आपके पास ये इसकी वैल्यू डीके होनी चाहिए. जब तक ये डीके नहीं होगा तो आपके पास इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी द रिजल्ट विल नॉट बी इक्वल्स टू will not be finite. So it could only be finite when this is a decaying exponential. We have three type of exponential signals. We have discussed that in the lecture where we discussed the exponential signals. We can have a growing exponential. Growing exponential means each next value is greater than the previous value, so that is a growing exponential. So growing exponentials of infinite duration never converge, क्योंकि जब आप उनको सम करेंगे तो उसका आंसर फिनाइट नहीं आएगा. सो ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल तो कन्वर्ज नहीं करते. दूसरा केस होता है कांस्टेंट, जैसे आपकी हर वैल्यू जो है वो फॉर एग्जांपल 1 है, जैसे आपका सिग्नल x ऑफ t इज इक्वल्स टू u ऑफ t है. अब आप इस x ऑफ t इज इक्वल्स टू u ऑफ t को भी अगर आप फॉर एग्जांपल इंटीग्रेट करें फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर भी कभी आपके पास फिनाइट नहीं आएगा, बिकॉज दीज आर इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज़ जिनको आप सम कर रहे हैं जीरो से इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिट ड्यूरेशन है आपके पास. सो इस वजह से इसका आंसर भी फिनाइट नहीं आएगा. सिर्फ एक एक्सपोनेंशियल केस ऐसा है जिसका आंसर फिनाइट आता है, एंड दैट इज़ द एक्सपोनेंशियल जो कि डिकेइंग एक्सपोनेंशियल होता है, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिके कर रहा होता है, यानी हर नेक्स्ट वैल्यू पहली वैल्यू से मैग्नीट्यूड में कम होगी. सो ई रेज टू पावर माइनस ए टी यू टी ओनली कन्वर्जेज व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने मालूम किया था. ई रेज टू पावर माइनस ए टी यू टी ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, चूँकि ये यू टी की वजह से 0 से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है. सो ई रेज टू पावर माइनस ए टी ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, और ये एक्सप्रेशन भी हमने कैलकुलेट किया था 1 अपॉन जे ओमेगा प्लस ए with the condition that a must be equals to 0. Whenever a is not, whenever a is for example less than 0, then this does not converge and answer will be infinity. Answer will only be equals to 1 upon j omega plus a when a is greater than 0. So similarly now we want to find the Laplace transform for this signal. So we put it in this expression x of s is minus infinity to infinity e raised to power minus a t u t e raised to power minus st. Because of ut, this integral will also be can be written from 0 to infinity. So from 0 to infinity e raised to power minus s plus a
टी एंड डी टी एंड एस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे ओमेगा। सो इसकी जगह पे भी आप एस की जगह जहाँ जहाँ पे इसमें एस है वहाँ पे आप अल्फा प्लस जे ओमेगा जो है पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली ई रेज टू पावर अल्फा प्लस ए टी यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। सो इस वजह से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे वहाँ पे पहले हम लिख रहे थे 1 जे ओमेगा प्लस ए, बट नाउ इट इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to power minus alpha plus a t u t। so alpha plus a plus j omega जो है इसको लिखा जा सकता है with this condition that alpha plus a must be greater than 0। previously हमारे पास ये था कि a must be greater than 0, but now since s is equals to alpha plus a, so alpha plus a is equal alpha plus a must be greater than 0, but since alpha एस को अल्फा प्लस जे ओमेगा इज इक्वल्स टू एस, सो इस अल्फा प्लस एस की जगह हम एस भी लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट एक्स ऑफ एस इज 1/s प्लस ए with this condition that alpha must be greater than minus a। but what is alpha? Alpha is real part of s, so real part of s, because s was equals to alpha plus j omega, so if I asked you what is real part of s, so real part of s was equals to alpha. So this condition real of s is greater than minus a, only then this Laplace transform x of s will be equals to 1/s plus a. So Laplace transform of e raised to power minus a t u t is 1/s plus a with this condition that real of s must be greater than minus a। if real of s is not greater than minus a, this thing will not converge और इसका आंसर फिनाइट नहीं आएगा। फिनाइट आंसर उसी वक्त आएगा when real of s is greater than minus a। so Laplace transform converges for some values of real of s। the region or the values in which the Laplace transform exists are called region of convergence, or in short ROC। so for this particular example its ROC is real of s is greater than minus a। so सिर्फ ये उन वैल्यूज़ के लिए s की उन वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता है जहाँ पे आपके पास रियल ऑफ s ग्रेटर देन माइनस ए होगा। अगर रियल ऑफ s ग्रेटर देन माइनस ए नहीं होगा तो ये कन्वर्ज आपके पास नहीं करेगा। Okay, next we take another example, and in this case we have a signal x of t which is minus e raised to power minus a t u of minus t, and this signal, as opposed to the previous case, this signal exists for negative values of t because u of minus t is 1 from 0 to minus infinity. So it is also a decreasing function, decreasing complex exponential. The only difference is that this exists for the negative portion for negative values of t. So if we take the Laplace transform of this, the Laplace transform is defined like this, same expression, e raised to power minus a t e raised to power minus s t u of minus t dt, but because the signal exists from 0 to minus infinity, so this could be from minus infinity to 0, the integral limits can be changed, and expression x of s is same as we got in the previous case, 1/s plus a, but this time this signal will only converge if real of s is less than minus a. Instead of, if we compare it with the previous case, x of s was same in both cases, x of s was 1/s plus a in both cases, but for the previous example, example 9.1, the convergence conditions were real of s greater than a, but now it is real of s less than minus a. So minus e raised to power minus a t u of minus t has a Laplace transform 1/s plus a with the ROC, with the region of convergence real of s is less than minus a. So here we I want to say a few words about the algebraic expression and region of convergence of these, keeping in mind these two examples. So in both examples 9.1 and 9.2, the algebraic expression for Laplace transform remains the same, x of s is 1/s plus a. However, in which region the expression is valid, that changes। ठीक है, एग्जाम्पल 9.1 में भी एक्सप्रेशन यही था, x ऑफ s वाज 1/s प्लस a, लेकिन ये किस रीजन में वैलिड था? s की उन वैल्यूज़ के लिए वैलिड था जब रियल ऑफ s इज ग्रेटर देन a है।
However, in example 9.2 it was valid for real of s which are less than minus a, although expression इन दोनों केसेस में algebraic expression जो है वो 1 upon s plus a ही है. So with this, one thing which should be clear and from now onwards, that this algebraic expression is not sufficient to tell कि ये किस चीज़ का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है. क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल सिर्फ ये एक्स ऑफ एस दे दिया जाए विच इज़ 1 अपॉन एस प्लस ए, और आपसे ये पूछा जाए कि ये किस चीज़ का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो यू कांट टेल दिस, बिकॉज दो एग्जांपल्स जो हमने किए हैं, पहले केस में ई रेज टू पावर ए टी यू टी सिग्नल था, उसका भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म यही था. दूसरे केस में माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी विच इज़ अ डिफरेंट सिग्नल, उसका भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म यही था. सो बेसिकली इन दोनों के दरमियान 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस नहीं है. यानी सिर्फ हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से ये नहीं बता सकते कि ये क्या ई रेज टू पावर ए टी यू टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है या माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है. सो ओनली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज नॉट सफिशिएंट टू टेल कि इसका ये किस चीज़ का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है. हाउएवर विद दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इफ वन मोर इंफॉर्मेशन इज कंबाइंड एंड दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो फिर हम बता सकते हैं कि क्या ये ई रेज टू पावर ए टी यू टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है या माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है. बिकॉज फॉर एग्जांपल इफ यू आर गिवन एक्स ऑफ एस इज 1 upon s plus a and region of convergence is real of s greater than a, then you can tell कि ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म है e raised to power a t u of t का, जो पहली एग्जांपल थी. और अगर सेम एक्सप्रेशन दिया जाता है x of s is 1 upon s plus a but region of convergence is given as real of s is less than minus a, तो then you can tell कि ये जो हमने एग्जांपल 9.2 की है in which signal was minus e raised to power minus a t u of minus t, ये उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म है. So to completely describe Laplace transform we need two things. One is algebraic expression and the second one is the information of region of convergence. Region of convergence की information जब तक इस algebraic expression के साथ combine नहीं की जाती तो उस वक्त तक you can't tell, उस वक्त तक 1 to 1 correspondence नहीं होती इस एक्सप्रेशन के दरमियान और उन सिग्नल्स के दरमियान जो टाइम डोमेन सिग्नल है. दिस इज ओनली 1 to 1 correspondence is only achieved when this algebraic expression is combined with another information which is the information of region of convergence. So region of convergence की information जो है वो बतानी ज़रूरी है. और हर केस में अब जो एग्जांपल्स आप बाद में भी देखेंगे, अभी जिस चैप्टर में जितनी एग्जांपल्स हम करेंगे आप देखेंगे कि जहाँ पे भी हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो उसके साथ ही साथ हम उसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की इंफॉर्मेशन भी देंगे कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कौन सा एरिया है, किस एरिया में जो है ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है और किस एरिया में लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता. और लेटर ऑन फिर हम इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म से भी रिलेट करेंगे कि किस तरह का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो तो आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है और किस तरह का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता. ओके, सो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो अमूमन इस तरह से शो किया जाता है. मसलन पहली एग्जांपल के लिए जो आपके पास था आर ओ सी फॉर एग्जांपल 9.1 रियल ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस ए, सो एट सम पॉइंट माइनस ए यू हैव पोल, बिकॉज ये पोल को खैर अभी हमने डिफाइन नहीं किया, डिफाइन करेंगे, बट डिनोमिनेटर को आप इक्वल्स टू 0 पुट करें तो दैट गिव्स यू द पोल ऑफ द सिस्टम. डिनोमिनेटर में यू आर हैविंग द एक्सप्रेशन 1 upon s plus a, so your denominator was equals to s plus a. So if you put s plus a is equals to 0, you get a pole of the system at s is equals to minus a. तो एग्जाम्पल 9.1 के लिए कंडीशन ये थी कि रियल ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस ए, सो ये सारा एरिया जो माइनस ए से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है ये इस एग्जांपल 9.1 का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है. यानी इस रीजन में, इस सारी रीजन में, शेडेड रीजन में, ये शेडेड रीजन अप टिल इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती है. ऑब्वियसली अप टिल इन्फिनिटी शो नहीं किया जा सकता लेकिन ये एग्जिस्ट करती है माइनस ए से लेके अप टिल प्लस इन्फिनिटी. सो इस सारे रीजन में कहीं पे भी
लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस सारे रीजन में जो शेडेड रीजन नहीं है, विच इज़ द एरिया विच इज़ लेस देन माइनस ए, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर दिस पर्टिकुलर सिग्नल ऑफ एग्जांपल 9.1 डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह से जो एग्जांपल 9.2 थी उसमें जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की कंडीशन थी दैट वाज रियल ऑफ एस लेस देन माइनस ए। सो इस ये और ये भी अप टिल माइनस इन्फिनिटी है। सो माइनस ए से लेके माइनस इन्फिनिटी तक इस सारे रीजन में जो शेडेड रीजन है, इफ़ यू हैव एग्जांपल 9.2 सिग्नल, तो इस एरिया में इस सारे रीजन में इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस रीजन में अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सेम होने का सिंपली मतलब ये है कि ये दोनों किस्म की जो एग्जांपल्स थी इनका जो डिनोमिनेटर था वो सेम था, या इनका जो पोल था वो सेम था, बोथ फॉर हैविंग अ पोल एट अ पॉइंट माइनस ए, ये भी और ये भी। लेकिन इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो माइनस ए से ग्रेटर एरिया जितना भी है अप टिल प्लस इन्फिनिटी, और इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है माइनस ए से लेस जितना एरिया भी है अप टिल माइनस इन्फिनिटी, वो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। सो ऑल्दो algebraic expression for both examples is exactly same, however they converge in different regions. ये जिस रीजन में कन्वर्ज कर रहा है ये वाला उस रीजन में कन्वर्ज नहीं कर रहा, और ये जिस रीजन में कन्वर्ज कर रहा है एग्जांपल 9.2, ये वाला इस रीजन में कन्वर्ज नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज we have a signal which is a combination of two signals, 3 e raised to power minus 2t ut minus 2 e raised to power minus t ut। और अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए, या इसके बाद जितनी भी हम एग्जांपल्स करेंगे उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए, अब हम उसको इनफैक्ट फाइंड नहीं करेंगे, हम इस फार्मूला से डायरेक्टली कंपेयर करेंगे एंड वी विल राइट दैट एक्सप्रेशन। हमें पता है कि e रेज टू पावर a t u t का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1/s प्लस a विद रीजन ऑफ कन्वर्जेंस रियल ऑफ s ग्रेटर देन माइनस a। ये जो एग्जांपल 9.1 थी। अब अगर हमने 3 e रेज टू पावर माइनस 2t ut का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है तो वी विल कंपेयर दिस विद दिस थिंग e रेज टू पावर a t ut। 3 तो खैर कांस्टेंट है तो वो तो एज इट इज आ जाएगा। बाकी e रेज टू पावर माइनस 2t ut और e रेज टू पावर a t ut को अगर आप कंपेयर करें तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आपका जो a है इस केस में दैट इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, सो ये सॉरी दिस वाज e रेज टू पावर माइनस a t ut, यहाँ पे एक माइनस का साइन मिसिंग है। सो ये इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s प्लस a था। सो e रेज टू पावर माइनस 2t ut का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो 1/s प्लस 2 है। 3 तो एज इट इज ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली ये माइनस का साइन है 2 e रेज टू पावर माइनस t ut, ये माइनस का साइन तो एज इट इज आ जाएगा एक्सप्रेशन में बिकॉज दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। e रेज टू पावर माइनस t ut को अगर आप इससे कंपेयर करें तो इट मींस a इज -1, सो दिस विल बी 1/s प्लस 1 एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस केस के लिए रियल ऑफ s ग्रेटर देन -1, इस केस के लिए रियल ऑफ s ग्रेटर देन -2। सो इस एक सिग्नल के लिए जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ रहा है वो आ रहा है रियल ऑफ s ग्रेटर देन -2, दूसरे सिग्नल के लिए आ रहा है रियल ऑफ s ग्रेटर देन -1। सो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है -2 से प्लस इन्फिनिटी तक है, इसका -1 से प्लस इन्फिनिटी तक है। आप जब दो सिग्नल्स को कंबाइन करते हैं, जैसे इनको हम यहाँ पे ये इनका एक लीनियर कम्बिनेशन है, सो इनके हम जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है इनको भी कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके हम ये एक्सप्रेशन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। वो सिंपल है 3/s प्लस 2 माइनस 2/s प्लस 1 और फिर एलसीएम लेके इनको आप मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। सो एक्सप्रेशन को तो कंबाइन करना प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन ये है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का क्या होगा। सो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जब भी आप दो या दो से ज़्यादा सिग्नल्स को कंबाइन करेंगे तो उनका कम्बिनेशन का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो होगा जो उनका ओवरलैपिंग एरिया है। जैसे इसका अगर हम सिर्फ इस सिग्नल की बात करें इस नीचे वाले की, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है -2 से प्लस इन्फिनिटी। अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है -1 से प्लस इन्फिनिटी। सो इनका कॉमन एरिया कौन सा है, इनका इंटरसेक्शन का एरिया कौन सा है, वो है बिटवीन -1 to
टू प्लस इन्फिनिटी। सो इस कम्बिनेशन का भी जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो माइनस ग्रेटर देन -1 यानी -1 से लेके इन्फिनिटी तक इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। सो ये चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप दो या दो से ज़्यादा सिग्नल्स को कंबाइन करेंगे तो कम्बिनेशन का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो एरिया होगा जो उन इंडिविजुअल सिग्नल्स का आपस में ओवरलैप कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे इन दोनों का -1 से माइनस इन्फिनिटी तक एरिया ओवरलैप कर रहा था, तो कम्बिनेशन का जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो -1 से माइनस इन्फिनिटी तक है। ओके, समटाइम्स ये हो सकता है कि आपके पास ओवरलैपिंग एरिया जो है वो ज़ीरो हो। मसलन अब अभी हम मे बी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन ये एक जस्ट इस चीज़ की एग्जांपल है कि लेट्स सपोज आपके पास एक कोई x1 ऑफ s किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। इट हैज़ सम पोल ओवर हेयर, ये आपको एक पोल यहाँ पे जो है शो किया गया है। तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इससे लेस सारा एरिया है अप टिल माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली x2 ऑफ s जो है इसका भी एक पोल है यहाँ पे, और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है इस पोल से स्टार्ट होते हुए ये प्लस इन्फिनिटी। अब अगर आप इस सिग्नल और इस सिग्नल को इसका लीनियर कम्बिनेशन लेंगे तो इनके दरमियान कोई ओवरलैपिंग एरिया नहीं है, क्योंकि इसका एरिया ये अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट -1 है तो इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ये -1 से माइनस इन्फिनिटी तक है, और ये पॉइंट अगर फॉर एग्जांपल +1 है तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस +1 से प्लस इन्फिनिटी तक है। सो इनके दरमियान अब कोई ओवरलैप नहीं है इन दोनों एरियाज के दरमियान। सो अगर आप इन दो सिग्नल्स का लीनियर कम्बिनेशन ले लेंगे x1s प्लस x2s, तो इसके रिजल्ट के तौर पे चूंकि इनके दरमियान कोई ओवरलैपिंग एरिया नहीं है तो इस कम्बिनेशन का जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट और जीरो, विच मीन्स कि इनका कम्बिनेशन कहीं पे भी कन्वर्ज नहीं करता। ठीक है, सो कहीं पे भी कम्बिनेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इनके दरमियान जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है इनका कोई रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ओवरलैपिंग नहीं है। सो जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो एरिया यू विल गेट विल बी इक्वल्स टू जीरो। सो इट मीन्स कम्बिनेशन डज नॉट कन्वर्ज एट एनी पॉइंट। सो ये हो सकता है किसी केस में कि आपके पास जो कम्बिनेशन है उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एम्प्टी सेट आए या ज़ीरो आए। इट सिंपली मीन्स कि कम्बिनेशन जो है वो एस डोमेन में कहीं पे भी कन्वर्ज नहीं करता। सो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन किया और ये बताया कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस है। जनरली स्पीकिंग जस्ट अगर कपल ऑफ पॉइंट्स को मैं रिवाइज करूं जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म यू कैन फाइंड फॉर एनी सिग्नल, वेयर एज फोरियर ट्रांसफॉर्म ओनली एग्जिस्ट फॉर दोज सिग्नल्स फॉर दोज impulse responses which corresponds to stable system। अगर सिस्टम स्टेबल नहीं है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन लैप्लास ट्रांसफॉर्म हर किस्म के सिग्नल का एग्जिस्ट करता है। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैन बी यूज्ड टू एनालाइज दोज सिस्टम्स which are unstable, whereas Fourier transform can only be used to analyze those systems which are stable। ठीक है, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ मोर जनरल टूल देन फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये स्टेबल सिस्टम्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, अनस्टेबल सिस्टम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसके बाद जो ज़्यादा नेक्स्ट हम लेक्चर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एक दो लेक्चर्स, उसके अंदर हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और फर्दर ये फाइंड करेंगे कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की टर्मिनोलॉजी में फोरियर ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट टाइम तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।